the IBC. So if you were to look at performance, I've listed some of them. So your GDP, as we look at governance, development and performance, I have something to say on each of these. So this budget, vote on account, is getting presented with the GDP that we want to speak to you about, and in that the fiscal management actually is something which I would like you to spend some time even as you go through the budget, but I'll flag it here. Bringing down the fiscal deficit in spite of very challenging times as per the announced consolidation path and with transparency and prudence. So in fact, I was just remarking to my officers this morning, most of you all had already calculated the figures, RE revenue, RE expenditure, this is what it is, because every month you get the reports coming out. So you don't need to wait till the budget statement. Every month you get the accounts, and so budget process has become absolutely transparent and questionable. If there are any you're there to question, we are here to answer. But we set in the process of keeping everything brought on budget and nothing kept aside from it or underneath it. So with that, the budget deficit, fiscal deficit, 5.8%, which is much lower than the 5.9 which was at the BE. Similarly, for the 24-25 budget, we've given 5.1 as the fiscal deficit, so clearly indicating that we are on track to meet the glide path which was set in 2021-22, and that we are well on track to meet the 4.5% fiscal deficit, on or below 4.5 even by FY26. If this is the background with which I'm talking and the presentation of the budget happened, I want to very clearly put some things under the heading, if you want to call it that, Disha Nirdeshak Baatein. You must have heard the Honorable Prime Minister speak before the Parliament session, well before the sessions commenced. His usual customary remarks. He said the budget will be presented tomorrow and you will have some Disha Nirdeshak Baatein in it. So, what are those Disha Nirdeshak Baatein? There are about 5 of them I highlight. Social justice as effective and necessary governance model. So it's not just a slogan for us, social justice, we'll have to work for Nyay. No, we've shown you that it is a governance model and a successful one at that. So social justice as an effective and governance, necessarily a governance model. Then 4 major caste groups, as we call it, as Prime Minister has emphasized: the poor, the women, the youth and the Annadata. So Disha Nirdeshak Baatein, you have the second point. Third, focus on infrastructure. This year again, massive increases of capex happened in the last 4 years. This year too, there is 11% increase, resulting in a very recallable number, 11,11,111 crores. So continuing the trend of the last 4 years, where capital expenditure has been the route, one for revival earlier from COVID and now for sustained growth towards towards the Vikasit Bharat goal. Fourth is the using of technology as a huge opportunity. DPI as almost a new factor of production. So it is actually bringing in the value addition to the economy. It is facilitating every sector to bring in the value addition which is so required and improves on our productivity. And the last Disha Nirdeshak Baatein
is high-powered committee for extensive consideration of challenges arising from population growth and demographic challenges. So if these are Disha Nirdeshak Baatein, what were the major announcements? I'll recall very quickly 12 of them. I'm not spending any time except for reading out what those 12 are. 2 crore more homes under the PM Awas Yojana. We already completed nearly the 3 crore. Housing for middle class. Rooftop solar for at least 300 units of power generation every month, which will be Muft Bijli for the households. There will be some assistance and some kind of a funding which will be extended. So you're generating renewable energy, providing the renewable energy generators the free that which they would want to use, and over and above that, the surplus that they produce can be used for selling and earning money out of it. Enhancement of target for Lakpati DD from 2 crore women to 3 crore women. Preparing and empowering the MSMEs to grow and compete globally. Aligning regulatory environment for them. The sixth is making sure that the eastern region, and when I say eastern region, I'm not talking about northeast. Northeast will get the attention that they've been getting all the while. They will still continue to get it, and they will be on the top of our priority. But when I say the eastern region, I'm talking about Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh and Orissa, making sure that they'll become the engines of growth for the new Amritkal India that we are trying to use as a bridge towards leading to Vikasit Bharat 2047. And Eastern India, I've missed out on West Bengal, please add it. Bihar, Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh and West Bengal. Next generation reforms will be carried on, building consensus with states and stakeholders for reform, perform, transform. 3 major corridors which are programs for railways, for logistics efficiency, and they have been explained. The important point that I want to highlight there is to make sure for Vikasit Bharat, you just don't need to build for better passenger convenience, you need to build for better passenger convenience. You need to give them safety. You need to shorten the traveling time for them. So one of the corridor is going to give emphasis for high density routes where passengers traffic is very high. We need to bring efficiencies and better safety in those areas. But for Vikasit Bharat, passengers need to move as they wish. But equally, materials, raw materials, building goods, cement, rare earths, minerals, we need them to move efficiently as well. So the corridor will take care of that as well. So the synergy between movement of people and movement of goods is what is being highlighted in the 3 corridors that we're talking about. Ninth announcement, that is urbanization, looking at Metro and Namo Bharat. One of the railway related things which I missed out on telling you, 40,000 bogies are going to be improved in the standards with which they can be effective rolling stock and also give the convenience in the passenger experience inside the bogies as well. So 40,000 coaches are going to be brought up to the level of Vande Bharat standards. Metro and Namo Bharat I did mention, so that urban transformation through transit-oriented development can happen. The 10th announcement which I draw your attention to is 1 lakh crore corpus for research and innovation by private sector. So that's coming in at the 10th. 11th is boost to tourism, including spiritual tourism. Interest-free loans will be given to states so that they can build on iconic tourist centers. And the 12th one is supporting reforms in state. They are separate from the development of tourism centers, and therefore I want you all to have the clarity that help to centers
are supporting reforms in state is slightly different from boost to tourism. There will be a white paper on economic performance of the last 10 years compared with the previous 10 years. The 12th announcement is so much a statement that I would like to make, which is what I made in the budget speech as well. Government has got the trust and the confidence and the blessings of the people based on its exemplary track record of GDP, as I said, governance, development and performance, effective delivery, and also on Jan Kalyan. So highlighted points have been realized as goals of Viksit Bharat till now, and they are the realizable goals also continuing to be so, because what we want to underline is we govern with good intentions, true dedication and hard work in the coming years, and that's why Amrit Kal is also now called Kartavya Kal. In short, that's the budget. Thank you very much. The Finance Minister has just now encapsulated the key highlights of the budget. We'll now open the floor. We can begin with the front row here. Please go ahead, 53. तो वित्त मंत्री थी आज अंतरिम बजट पेश करने के बाद ये थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताते हुए कि उन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें नजरें हैं कि 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाना है, और अभी जो है विकासशील देश से विकसित बनने के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए वो की हैं। फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को जो उन्होंने सेट किया है उसे लेकर के हम भी आज दिन में जो अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं वो भी काफ़ी खुश नजर आए, और उन्हें भी लग रहा है कि उन्होंने जो टारगेट दिया है ये एक बहुत ही बेहतरीन टारगेट है उनके हिसाब से। चलिए, तो इन सब पर हम बात करेंगे। और व्हाइट पेपर की बात की है जिसमें उन्होंने कहा कि वो व्हाइट पेपर सरकार लेकर आएगी जिसमें इन 10 सालों में किस तरह की हमने आर्थिक ग्रोथ देखी है इसे कंपेयर किया जाएगा इसके पहले के जो 10 साल रहे थे। और अब वापस आते हैं अपने एक्सपर्ट के साथ। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल जी, सीएफपी पूनम रूंगटा और जितेंद्र सोलंकी जी सीएफपी हैं। हम इनसे ही बात कर रहे थे, तो मैं अपनी बातचीत के राउंड को फिर से फोकस करती हूँ कि आपकी बचत और आपकी सेविंग और आपके टैक्स पर क्या असर पड़ा। तो टैक्स पर जो एक बड़ा असर, विनोद जी आपसे शुरुआत करते हैं। आपने कहा कि जब मैम वित्त मंत्री मैडम ने कहा कि आई प्रपोज नो चेंज, तो सभी के दिल को चोट पहुंची, लेकिन इसके साथ जो 2 अच्छी बातें जो मुझे नजर आई हैं वो ये कि रिटर्न फाइलर्स की संख्या बढ़ी है, 2.4 टाइम्स बढ़ी है, और दूसरी बात कि रिटर्न की प्रोसेसिंग का टाइम घटा है और अब रिफंड जल्दी मिल रहा है। ये 2 अच्छी खबरें हैं। आप ग्राउंड में लोगों से जब मिलते हैं, आप तो इतने लोगों के रिटर्न्स फाइल करवाते हैं, आप भी ये महसूस कर रहे हैं ये हुआ है? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से 100% कि ये टाइम में बहुत फर्क पड़ा है। और अगर मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताऊं तो हमने एक रिटर्न ऐसी भी फाइल की जिसको हमने फाइल करके वेरीफाई करके अभी चाय भी नहीं रखी थी और रिफंड क्रेडिट हो गया था बैंक में। Okay. तो ये रियल लाइफ मैं आपको यहाँ का केस बता रहा हूँ, ये अमेरिका का नहीं है, वहां नहीं आता है, ये भी बता दूं। बिल्कुल ठीक कह रही है, वो प्रोसेसिंग टाइम 93 डेज से 10 डेज एवरेज है ये, क्योंकि बहुत सारी लटक जाती है तो वो कई लेट है रिटर्न्स। उसके साथ साथ प्रोसेसिंग में बहुत अच्छे से जो पोर्टल जिस तरह से इंप्रूव हुआ है और फेसलेस जिस तरह से हुआ है। चलिए हम वापस आते हैं अपने बजट पे। आज के बजट में उन्होंने कहा कि मेरी 10 साल के अंदर ट्रिपल कलेक्शन हो गया है इनकम टैक्स का, और टैक्स फाइलर जो हैं वो बढ़ गए हैं। पर कहीं ना कहीं हमें अभी भी लगता है कि अगर ये सब कुछ है तो इंसेंटिवाइजेशन भी होना चाहिए था। रिफंड जल्दी आता है, ठीक है, उससे लिक्विडिटी मेरी इंप्रूव हो जाती है, मेरा पैसा स्टक हुआ होता है, मेरा लेजिटिमेट पैसा है, सरकार अपने पास रख लेती है, सरकार को उस पर ब्याज भी देना पड़ता है तो सरकार अपना ब्याज भी बचा रही है, एक सिस्टम से उनकी सेविंग भी है। फिस्कल डेफिसिट में भी मैंने कहा कि मैंने 5.9 से रिवाइज होते हुए 5.8 शायद पहली बार देखा, बढ़ते हुए तो देखा, घटते हुए नहीं देखा। हो सकता है कभी हुआ हो, मेरी नॉलेज में नहीं है, बट मैंने नहीं देखा। तो ये 0.01% जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट कम होना एक बहुत अच्छा संकेत देता है। अगले साल के लिए भी उन्होंने 5.1 रखा है, तो फिस्कल डेफिसिट को बहुत अच्छे से किया है। और टैक्स रिटर्न्स पे अगर मैं आऊं अपने टैक्स पे, तो भले ही उन्होंने टैक्स में कोई रिलीफ नहीं दिए हैं किसी भी तरह के,
लेकिन उन्होंने किसी तरह के टैक्सेस लगाए भी नहीं है और किसी तरह का बर्डन नहीं डाला है। तो जुलाई तक तो कम से कम हम रिलीफ रह सकते हैं उसी टैक्स रेट्स पे जो पहले से है। उम्मीद कर रहे थे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन में थोड़ा सा चेंज आ सकता है इन्फ्लेशन को देखते हुए, वो भी नहीं किया है। स्टिल वी कैन होप फॉर द बेस्ट टिल जुलाई कि अगर कोई ऐसा अच्छा उसके बाद आता है, टैक्सेस वही के वही रहने वाले। ठीक है, लेकिन एक बड़ी बात जो हुई है वो हुई है करीब 1 करोड़ करदाताओं को एक छुटकारा मिल रहा है पुराने उनके जो भी पेंडिंग टैक्स के नोटिस थे या टैक्स डिमांड थी। आप इसे कैसे देखते हैं? 2 कैटेगरी में इन्होंने बांटा है। 25,000 तक की अगर आपकी टैक्स की डिमांड थी 2009-2010 फाइनेंशियल ईयर, आई थिंक आई एम गेटिंग इट राइट, हाँ, और 10,000 तक की अगर डिमांड है तो 2010 से लेकर के 2015 तक के बीच में अगर ये डिमांड है तो बिल्कुल इससे छुटकारा। ये अच्छी खबर है टैक्स पेयर्स के लिए। जी बहुत अच्छी खबर है, एक एमनेस्टी की तरह है, क्योंकि पुरानी डिमांड्स हमारी वहां खड़ी हुई हैं, ना तो उसके पेपर्स हमारी फाइलों में मिलते हैं। अगर 2007 की वो कह दें आपसे 3,000 रुपए लेने हैं तो कहां से पेपर